and then we will do it in the class. So we have completed section 49. Section 50 is talking about interest. Section 51 is talking about TDS. Section 52 is going to talk about TCS, and likewise. Similarly, we have section 54, which is going, 53 is going to talk about returns, and then section 54 is going to talk about refunds. तो आप देखेंगे तो इनिशियली जो चैप्टर्स है, these are purely theoretical chapters, account, audit, assessment, and record. So what I felt today, that whatever the chart are there, which I am going to draw on the blackboard, I will take those topics online. Okay, because I did not have to write, and the practical one I am going to teach you offline. Are you getting me? तो ये जो प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, ये हम लोग ऑफलाइन करेंगे. कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, कितना इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, कैसे उसके डेज को ऐड करेंगे, whether to be taken as a date of transaction or date of due date of payment. तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? We are going to do it offline for better understanding. Am I clear to you all? ठीक है? Then if you see all these things, even TCS, TDS के questions हम लोग offline करेंगे. Why? Because these are practicals. These are practicals. And this I have already discussed with you all. Right? How to file the return. And we are doing it also in regular lectures. Then if you go section 54 onwards, because section 54 mein there are 13 subsections. Section 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 subsections. Okay. So this I wanted, we will take it up online. Why? Because again, I will not have to waste my time to draw all these things on the blackboard, and you will wait till then. So what is your suggestion about it? Being a faculty, I feel I should go like this. Wherever there is a theoretical part, we will be taking online. And wherever there is a practical aspect, we will be going offline. What is your opinion about this? Just let me know. So then we will be doing justice, and forget about the students who are unable to come to the college. Today you must be knowing there is a meeting with the principal. Okay, you need to be there. But all these things what I have taught you, taught them during last year is there on my YouTube channel. So this all you can learn from there. There is no problem about that. Is this clear? तो ऐसा नहीं कि सर अगर आप यहाँ नहीं सिखा रहे तो मेरे पास उसको रेफरेंस के लिए ऑप्शंस नहीं है. रेफरेंस का ऑप्शन इज देयर. You can refer from there. Okay. So today we'll be learning section 54, which will talk about refund. So kindly take down all these subsections, and then I'll be able to explain you. Okay. For better understanding, I'm making it full screen. I hope now it is properly visible. You take 2 pages, because you know after this also there are other subsections. Okay, there are total 13 subsections. So kindly take down, okay, if required.
we try to understand, it's very simple to understand. Refund is available to any person, right? And you should make the claim within 2 years. Then it will be allowed. Section uh, 54 subsection 2 talks about other than person if it is UNO, right? For them, the provisions are explained under section 54 subsection 2. Subsection 3 talks about utilize ITC zero rated supply. So suppose you have supplied with the zero rated, then how you will talk about and ask about refund. So this is without payment of tax, this is with payment of tax. If without payment of tax you are asking for refund for service and goods, you can utilize through ITC. Don't ask, you will not get cash payment. You will get the benefit of ITC, and there won't be any refund if there is a zero rated goods supply. With payment of tax, because you have paid to the government, you will get the refund. Try to understand the logic. तो अगर आप गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट भी आपको कुछ पैसे रिफंड नहीं करेगी, बट अगर आपने गवर्नमेंट को पे करा है देन गवर्नमेंट विल पे योर रिफंड. Okay, if you have paid the output tax, you will get the claim. Understood? Very simple logic it is. Section 54 subsection 4, they are talking about non-monetary evidence. Okay, for more than 2 lakhs, you have to prove the monetary evidence, everything. If the tax burden is shifted to third party, then transfer of such refund will be going to welfare, and that claim to be done within 16 days. Then export, 90% claim should be accepted immediately. अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हारा कोई रिफंड है गवर्नमेंट से, रिफंड आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, यू हैव लर्न in direct tax also. If you pay more, there will be tax refund. If you have paid less, there will be tax liability. Again, without payment of tax, you can utilize in ITC. The government will not pay, but आप उसको tax pay करते time ITC में benefit ले सकते हो. Okay, with payment, utilize ITC, or you can even ask for the duty. And if export rate of duty is there, then it will not be allowed, or even after that it might be allowed. This is all there in first subsection 6, 1 to 6 of section 54, which talks about refund. Then remaining subsection we will be writing later on. If you have not understood anything, please ask me. And all theory notes of this has been already provided to you all. इसका PDF दे दिया गया है आप लोगों को. Once it is completed, please let me know.
Completed everyone of section 54 subsection 1 to subsection 6 सबका complete हो गया, इसका complete हो गया. Just any doubt? I think these are self-explanatory things. इसमें कुछ नया नहीं है. Yes. बोलो समीरा. You have raised hand to show that you have completed or you wanted to ask something. Anyone who has left out, not written, please let us know. Then we will go for remaining. ये कितने थे? 6 ना? 8 more to come. Total 13 subsections are there. Acha, what was your doubt related to research? I mean research project. You were asking, no, the title and all, because we'll be going out of town. Samida, what was that? Sir, a study on manufacturing defense goods in India, right? ऐसा मत करो. बहुत raw topic लग रहा है. ऐसा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए कि टॉपिक के नाम से ही वेट आना चाहिए. आपने उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है और किसने किसने इस पे प्रोजेक्ट किया हुआ है या रिसर्च किया हुआ है या रिसर्च पेपर किया हुआ है? डू इट. ये तो सही है. स्टडी ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, फिर स्लैश डाल के बून और बैन फॉर इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, या इंडियन इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाएगी या इंडियन इकोनॉमी को डाउन लेके जाएगी. ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर होना चाहिए which has lot of impact. Okay. See, now you must be knowing that we started exporting this defense equipment, and of course it is going to help economy in a big way, and it will be a great threat to the neighboring countries. ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, and of course it requires huge infrastructural and capital investment. Try to understand earlier who were the players. USA, France, or Germany, who are, I mean, developed nation, and you are just developing. और उसमें से आपने ये चीज ले ली है. Russia. Now you wanted to be a part of it. So of course you have to be such kind of mentality whereby your investment, your infrastructural development will be very strong. Okay, and do certain review of literature. You will get to know how to go about it. Tanya, I have given you certain topic. Sir? Yes. Sir? Sir, make in India opportunities and challenges करूँ क्या? For defense goods. हाँ चलेगा. Best. Very nice. ऐसा So like make in India challenges and opportunities in defense goods. Very good. Very good. Okay. या आत्मनिर्भर भारत, ऐसा भी कुछ नॉमेनक्लेचर दे सकते हो.
Yes, Sanya, you were asking for a certain topic I have given you that day. Had you started working? Yes, sir. Government क्या था? पाइपलाइन क्या क्या वर्ड था? डिमोनेटाइज पाइपलाइन. Artificial intelligence and machine learning. वो और एक टॉपिक दिया था मैंने बहुत इम्पोर्टेंट. National monetization pipeline, carbon credit. पाइपलाइन. यस यस. उस पे काम किया. किसने लिया नेट? 3 टॉपिक दिए. ये टॉपिक किसने लिया है? 3 टॉपिक दिया था आपने मेरे को ना. हाँ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पहला, दूसरा हाँ. कार्बन क्रेडिट. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में किसी ने ढूंढना चालू किया. मैंने स्टार्ट किया ढूंढना. तीनों टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया मैंने, देखा टॉपिक्स. और अभी मैं आशुतोष भैया से थोड़ा बात किया तीनों टॉपिक के बारे में. तो उन्होंने बोला तीनों भी टॉपिक बहुत अच्छा है, बट बहुत रिसर्च करना पड़ेगा. क्योंकि तीनों ये तीनों क्या होंगे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होंगे. इस पे किसी ने काम नहीं किया है बिकॉज दीज आर हाँ, और आशुतोष भैया को खुद को नहीं पता था. किसी को नहीं पता है ये चीज ही नहीं है. आशुतोष भैया, हाँ, तो उन्होंने मेरे को पूछा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है. मैंने बोला मैंने थोड़ा देखा है, स्टडी किया है इसको, अभी This is देखते हैं called उस पे ही research. बनाते हैं. This is called research. And government is going a big way regarding this national monetization pipeline. आप लोग being the student of accounting and finance, I need not have to teach all this. You should study and you should learn with your own. This is the meaning of keeping research on 6th semester. Are you getting everyone? अगर मैं बच्चों को बोलता हूँ आते सर मेरे को टॉपिक बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप टॉपिक ढूंढने चाहिए. क्या फाइनेंस में नया चीज आ रही है, क्या टैक्सेशन में नया चीज ला रही है गवर्नमेंट या सोच रही है, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपको पता चला? बताओ. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में क्या पता चला? और अभी मैं बोलता हूँ तुम लोग गूगल करो, हर एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन है. So, वो ये गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को बोल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो सब चेंज करने को, तो सो दैट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े इंडिया में. आप समझ रहे हो? जो चीज पहले गवर्नमेंट करा करती थी अभी सारा का सारा उन्होंने प्राइवेटाइज करने की सोच ली है. प्राइवेटाइज करने. अब आपको बेस्ट रोड मिलेगा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. डू यू नो गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज गिवन एंटायर नॉर्थ में सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड हो गई है. प्रीपेड म्हणजे तुमको एडवांस में पे करना पड़ेगा. एडवांस में पे करना पड़ता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस में नहीं पे किए तो तुम्हारा कैसे मोबाइल बंद हो जाता है, बंद हो जाता है. वैसे ही बंद हो जाएगा. सच अ ब्यूटीफुल आइडिया. ना इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लॉस में जाएगी. एक्सेलेंट आइडिया. एक्सेलेंट. आई एम टेलिंग. which was a big problem for government. एंड आप लोग सब जानते थे इसके बारे में, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं. किसी ने तो रिसर्च किया and came out with such a beautiful idea. जब इंसान मोबाइल प्रीपेड रख सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड क्यों नहीं रख सकता? और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रीपेड हो सकती है, उसके बारे में सोचो. के बारे में सोचो. This kind of thought process is required in research. अगर ऐसा thought process नहीं होगा, you cannot give the best research. I'm telling you. It's always there. Researcher thinks what others can't. Researcher do what others can't. Right? Researcher visualize which others can't.
then only you are a true researcher. Am I very clear? तो ही आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी चीजें दे सकते हैं. And now very soon you are going to graduate from this college with such a professional degree. आगे अगर आप लोग ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं रखेंगे, ऐसे आप चीजें नहीं जानेंगे अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन में क्या हो रहा है, then days will be very tough for you all. बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. It's not only जब मैं बोलूं तभी आप लोग रिसर्च की बातें करें. When I am not there, you are at home. आज घर से नहीं निकलना है, आप गूगल तो करो, इतना आसान है. गूगल करो, ढूंढो क्या नया चीज है, किसके बारे में, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स मैं ढूंढ सकता हूँ या सकती हूँ जो नियर बाय मेरे को सोसाइटी में लगता है, अगर उसके बारे में मैं कुछ लेके आऊँ, it is going to give the lot of help to the society and people at large. Try to identify the problem. अभी देखो एजुकेशन में प्राइवेटाइज किया, एजुकेशन इज गिविंग बेस्ट और नॉट. बैंकिंग में प्राइवेटाइज किया, बैंकिंग इज गिविंग और बेस्ट और नॉट. Do you know day before yesterday RBI has given Paytm as a status of scheduled bank. Paytm को scheduled bank का status दे दिया. कल उसका शेयर प्राइस 20% हाइक. आप समझ रहे हो? तो एक रिसर्च will make you or break you. Choice is yours. I am going into this topic because Samita has called me and she has certain limitations. She may not come on Monday, Tuesday. उसने बोला था, मैंने बोला था, just remind me during lecture. I will try to resolve your issue. तो मुझे अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी पूछता है, I am always keeping in mind so that we can assist them as and when we get the time. ठीक है. For others also it is very important. Please keep your things very apt as far as this extra subject is concerned. I'm sure no other teacher is going to talk about this. But no other teacher can withdraw this subject from your syllabus. You have to appear 100 marks exam for this subject. But they will never going to teach you. तो ये आपको खुद से इनिशिएटिव लेना है और खुद से ये काम करना है. एंड इसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए. Okay. The next very important thing which I would like to bring to your notice that today evening there will be a meeting with principal ma'am. आपको notice आया रहेगा. All of you try to join. अच्छा, now for remaining 8 subsection, please join with the same login ID.